Hello, hi everyone. This is Dr. Sana Khan, your biology expert, and you're watching my channel Neat Biology Unplugged. So today I'm opening up with another chapter, that is human health and disease. I know there are two more chapters where I'm uploading the videos and उनके ज़्यादा नहीं बचे हैं, दो तीन lectures ही बचे हैं. Like biological classification का सिर्फ fungi बचा है. Virus is already uploaded है on my channel and वो मैं soon playlist में upload कर दूंगी. And then स्टडी ऑफ एनिमल टाइप में भी 2 से 3 सिस्टम ही बचे हैं. But as I have uploaded malaria, so I thought that why not start with this chapter, specifically the initial part of the chapter, that is immunity, where I see a lot of children facing problems. Plus इसमें काफी सारे जो positive agents होते हैं या vaccines के नाम होते हैं, life cycles होती है, यहाँ पर भी बच्चों को काफी सारी problem होती है, जबकि ये chapter बहुत easy, one of the easiest chapter में आता है. For me it is like very simple chapter to be learned, मतलब बहुत फटाफट से आप इसे learn कर सकते हो अगर आप इसे properly notes बना के पढ़ोगे तो, because positive organisms बहुत important है when it comes to this chapter. So at the end हम जितने भी organisms के बारे में आपको पता होना चाहिए वो भी हम discuss करेंगे. ठीक है. So today I thought of discussing with the first part of the chapter, that is about the general definitions which are given in human health and disease. So without wasting time, let's get started and talk about the lecture 1 of human health and disease. Okay, so human health and disease, नाम से ही it is very very clear कि यहाँ पर हम सबसे पहले human related चीजें पढ़ेंगे, human related health के बारे में पढ़ेंगे, human related disease के बारे में पढ़ेंगे. Correct? So what can you see in this two image? यहाँ पर दो images है, एक है जो खास रहा है and one is standing very handsome तरीके से ऐसे आराम से खड़ा हुआ है, right? So why I have put this picture over here? The reason behind is the first image, the first person is clearly showing that it is having a particular disease, right? So when a person is having a disease, what do we say? The person is not healthy, correct? इतना हमें like बचपन से पता ही है. बट दूसरा वाला जो बंदा है वो काफी डिसेंट लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है देख के यार फिट है, डिसेंट इन द सेंस आई मीन टू से कि देख के लग रहा है कि काफी फिट है, करेक्ट? तो क्या इसका मतलब है कि वो हेल्दी है? क्या आपको अगर देख के लगता है कि यार इसको कोई भी डिसीज नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है, देख के अगर आपको लग रहा है, so do you feel that the person would be actually fit, would be actually disease free? Let us understand this in detail. See, health. What does health means? Health does not simply mean absence of disease. ठीक है, हेल्थ का मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपको डिसीज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हेल्दी हो. ठीक है, आपको कोई लाइक ब्लड प्रेशर नहीं है, आपको डायबिटीज नहीं है, आपको कोई भी डिसीज नहीं है, इट डजंट मीन दैट यू आर हेल्दी. उसके अलावा भी बहुत कुछ है हेल्थ में which you should know. Health does not simply means absence of disease or physical fitness. Health is defined using three main terms: physical, mental and social. ठीक है, तो जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि बंदा फिजिकली फिट है तो भाई वो हेल्दी है. फिजिकली फिट है तो यस, दैट इज वन ऑफ द क्राइटेरिया टू बी हेल्दी, करेक्ट. उसके अलावा मेंटली एंड सोशली ऑल्सो द पर्सन शुड बी फिट. So let us define health. It is a state of complete physical well-being, mental well-being and social well-being. So health is defined as a state of physical, mental and social well-being and not merely an absence of disease or infirmity. What does this word infirmity mean? It means state of weakness or debility. ठीक है, तो हेल्थ को कैसे डिफाइन करेंगे? फिजिकली द पर्सन शुड बी फिट, मेंटली द पर्सन शुड बी काम, ही शुड नॉट बी इरिटेटेड, ही शुड नॉट बी ऑलवेज इन एंगर. अगर किसी को हर वक्त गुस्सा आ रहा है, चिल्ला रहा है, कोई बंदा हर वक्त झगड़ा कर रहा है घर के लोगों से, आजू बाजू के लोगों से, कम्युनिटी से, इट मीन्स दैट द पर्सन इज नॉट हेल्दी. द मेंटल स्टेटस ऑफ दैट पर्सन इज नॉट हेल्दी. Okay, so health is defined as physical, mental and social well-being
and not merely an absence of disease or infirmity. Infirmity means state of weakness or डेबिलिटी. अगर आपको कोई वीकनेस नहीं है, आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप हेल्दी हो. आपका मेंटल जो इमोशंस होता है वो काफी काम होना चाहिए. आपका रिलेशनशिप आपके घर वालों से, आपके कम्युनिटी से वो काफी ज्यादा हेल्दी होना चाहिए. जब ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं, दैट इज द टाइम वी से दैट द पर्सन इज healthy. So let us define the definition once again for health. Health is defined as a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely an absence of disease or infirmity. Very very important. Boards के लिए भी important है, and NEET exams के लिए तो मतलब बहुत easy ही है. Obviously अगर आ गया तो 4 marks तो pocket में है ही है. Correct. Now let us proceed further. How do you remain healthy? Health का definition तो समझ में आ गया, लेकिन हम healthy कैसे रहे? Obviously hygiene, right? Since this entire corona phase, this 2-year phase, हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है कि जितना ज्यादा हाइजीनिक कंडीशन होंगे उतने कम आपके अंदर जर्म्स जाएंगे, right? So to remain healthy, it is very very important that we follow hygiene. So what is hygiene? Hygiene is a science of health. It aims at preserving, maintaining, improving the health of an individual or the community as a whole. तो जब हम हाइजीन को फॉलो करते हैं तो हम सिर्फ अपने आप को ही डिसीज से नहीं बचाते, हम हमारे आजू बाजू के जो लोग हैं, हमारी जो कम्युनिटी है, उनसे भी डिसीज स्प्रेड हो, उनको भी डिसीज स्प्रेड होने से बचाते हैं. So what is the definition of hygiene? It aims at preserve करना, maintain करना and improve करना आपकी health, मतलब the individual health as well as community as a whole health. So hygiene plays a very 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 important role when it comes to being healthy. So how do you maintain good health? There are certain things which you should remember. सबसे important thing is balanced diet. ठीक है, this is something जो बहुत ज्यादा अभी आजकल कम देखने को मिल रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली पीपल आर इंडल्ज इनटू जंक फूड्स. तो इसीलिए आपकी जो डाइट है जब वो बैलेंस नहीं होती है तो भी आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही है. सो बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज. यस, आई वुड से अगर इफ यू फील कि यार मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मेरे लाइक इतना सारा पढ़ाई है, मैं पढ़ाई करूँ या एक्सरसाइज करूँ, आई वुड से दैट पढ़ाई भी करो और 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज भी करो. बिकॉज जब आप एक्सरसाइज करते हो, when we exercise, actually at that time we feel fresh. ठीक है, जो बॉडी में जो ब्लड का रश होता है उसके वजह से जो फीलिंग होती है ना, वो उसकी लेवल ही कुछ और होती है. सो एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हेल्दी. पर्सनल हाइजीन, राइट एटीट्यूड ऑफ माइंड. जो हम बचपन से कह रहे हैं ना, बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव, पूछा करते थे ना क्या ये आपका ब्लड ग्रुप है, समझ लो बी पॉजिटिव ही सब कुछ है. जितना ज्यादा आप पॉजिटिव रहोगे उतनी ज्यादा अच्छी आपकी स्टेट ऑफ माइंड रहेगी. ठीक है, पॉजिटिव का मतलब ये भी नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना कि भाई अब तो बस नीट क्लियर होना ही है, पर उसके लिए मेहनत भी करना है. ठीक है, और ये भी नहीं सोचना है कि भाई हमसे नहीं होगा. सो राइट एटीट्यूड ऑफ माइंड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू बी हेल्दी. ठीक है, मतलब आई फील मेंटल स्टेटस इज मच 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 मोर इम्पोर्टेंट to remain healthy. Then good habits, there are certain good habits which you need to follow to remain healthy. So these are the few things like balanced diet, regular exercise, personal hygiene, right attitude of mind and good habits जिसको आप follow करके health को maintain कर सकते हो. And because अब ये हेल्थ को मेंटेन करने की जरूरत क्या है? बहुत ही ज्यादा जरूरत है. अभी जहां मैं बैठी हूँ, आप जहां बैठे हो, सुन रहे हो, आपके आजू बाजू क्या है? हमारे आजू बाजू है बहुत सारे फॉरेन बॉडीज. सो every day we are exposed to various foreign bodies, various infectious agent. But despite those foreign bodies, those pathogen, we are still healthy, right? क्या हर वक्त हम डिसीज हो जाते हैं? क्या हर वक्त हमको बीमारी आती है? नो, राइट. आजू बाजू आपके लाइक हाथ में, आपके टेबल पे, आप लाइक जिधर भी आप बैठे हो, वहां पर thousands of bacteria है, right? Thousands of pathogens है. But still every time we do not get infection. Yeah, we sometimes we do get, but that will get when our immunity is low. But every time we do not get infection, right? So that is why it is very important that we follow good habits. So why do we do not get infection? क्यों? जब हम exposed है to the pathogen, जब हमारे आजू बाजू इतने सारे pathogen है,
तो हमें इतनी आसानी से डिसीज क्यों नहीं होती है? So let us understand the reason behind it. So human body has ability to resist almost all type of foreign bodies. तो ये हमारे बॉडी की एबिलिटी है कि वो सारे के सारे जो फॉरेन बॉडीज है उसको रेसिस्ट कर सके, उसको रोक सके, ठीक है, आपके बॉडी में इंफेक्शन करने से उसको रोक सके, तो वो हमारे बॉडी की एबिलिटी होती है, एंड दैट एबिलिटी इज कॉल्ड एज रेसिस्टेंस. So resistance is the ability to ward off damage or disease through our defense mechanism. So we have a very important defense mechanism in our body जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं. तो इम्यून सिस्टम के अंदर एबिलिटी होती है कि आपको हर वक्त वो जो पैथोजन आपके आजू बाजू है उससे आपको प्रोटेक्ट कर सके. Okay, and the system which protects us from various infectious agents is called as immune system. So this immune system plays a very important role in your health. So that is why we need to keep good habits, we need to follow hygiene, we need to eat properly so that our immune system is maintained. ओके, सो इम्यून सिस्टम के बारे में ये चैप्टर में हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. तो दिस वाज जस्ट अ फ्यू डेफिनेशंस, लाइक वी टॉक्ड अबाउट हेल्थ, वी टॉक्ड अबाउट हाइजीन, वी टॉक्ड अबाउट रेसिस्टेंस टिल नाउ, राइट, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो हेल्थ था, जिसका डेफिनेशन क्या था, देखो मुझे कितनी जल्दी से याद हो गया. हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ physical, mental and social well-being and not merely an absence of disease or infirmity. Okay, so that now let us proceed further and talk about few more general things. See, now the system which protects us from infection, that is called as immune system, correct? So this immune system provides us with immunity. What do we say? This immune system provides us with immunity. So this word immunity came from a Latin word जिसको हम कहते हैं immunis. क्या कहते हैं हम इसको? immunis, which means exempt or freedom. एंड जो ये कॉन्सेप्ट था इम्यूनिटी का, दैट वाज ब्रॉट बाय एडवर्ड जेनर. किसने लेकर आया था? एडवर्ड जेनर, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया. सो एडवर्ड जेनर वाज अ पर्सन हु बॉट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी. एडवर्ड जेनर ने एक और भी एक काम किया था. डू यू रिमेम्बर? Yes, that can be asked in your NEET exam. स्कूल सेक्शन से पढ़ते हुए आ रहे हैं. जो पहली वैक्सीन स्मॉल पॉक्स पे निकली थी, किसने बनाई थी? एडवर्ड जेनर ने बनाई थी, राइट? So Edward Jenner was a person who introduced us with this vaccine concept, who introduced us with immunity, right? So let us define immunity. Immunity refers to the general ability of a body to recognize harmful foreign substances, neutralize those substances, or destroy and eliminate from our body, or resist a particular infection or डिसीज. तो इम्यूनिटी का मतलब क्या है? हमारी जो बॉडी है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो पैथोजन कौन सा है उसको रिकॉग्नाइज करे, उसको पहचाने, फिर उसका जो इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज, नल करे, या फिर वो पैथोजन का पूरा खात्मा कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, और हमारी बॉडी से उसको निकाल फेंके, या फिर इट विल रेसिस्ट, वो हमारे बॉडी में वो इन्फेक्शन को आने से ही रोकेगी. क्लियर है? सो इम्यूनिटी रेफर्स टू द जनरल एबिलिटी ऑफ अ बॉडी to recognize, neutralize or destroy and eliminate the harmful foreign substances. Okay, so that is a definition of immunity. In today's lecture we are just going to introduce, I'm going to go very light with this chapter. Dhire we are going to go with this entire chapter. I will try to upload it as soon as possible, and I'll try to keep the lectures short, मैक्सिमम 14 मिनट्स और 15 मिनट्स, सो दैट फटाफट से आप देख लो और पढ़ लो और सब्सक्राइब कर लो यार फटाफट से. ओके, सो हाउ डज अ बॉडी आइडेंटिफाई द फॉरेन सब्सटेंस? ठीक है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, चलो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि पैथोजन होता है, पैथोजन को बॉडी हमारी बॉडी में वो इन्फेक्शन करने से रोकती है, बट हमारी बॉडी पैथोजन को कैसे रिकॉग्नाइज करेगी? उसको कैसे पता चलेगा यार ये तो बाहर का कोई एजेंट है, ये हमारे बॉडी का सेल नहीं है? Right? Yes or no? So body should have the ability to recognize a foreign substance. So foreign substance पे होते हैं identification markers. क्या होते हैं? Identification markers. See this one. So these are the identification markers which are present on the pathogen, जिसको यूज करके हमारा immune system recognize करता है कि ये कोई बाहर का एजेंट है
या फिर हमारे बॉडी का ही सेल है। अंडरस्टूड? सो हाउ विल आवर इम्यून सिस्टम इज गोइंग टू रिकॉग्नाइज? सो इट रिकॉग्नाइज विद दैट आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स कि ये हमारे बॉडी के सेल है कि नहीं है। Okay, so it is going to, if it is obviously not matching the identifications markers which are present on the pathogens are not matching to our body cell, it means वो foreign agent है। और वो foreign agent को हम क्या कहते हैं? We call it as antigen. What do we call it as? Antigen. So antigen is any foreign substances invading the body and capable of stimulating an immune response. सो एंटीजन एक फॉरेन सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में इन्वेड कर रहा है और स्टिम्युलेट कर रहा है इम्यून रिस्पॉन्स। नाउ व्हाट डज दिस इम्यून रिस्पॉन्स मींस? बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आप बैठे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आपका भाई या बहन आया, आपको 2 लात मार के गया, व्हाट वुड बी योर रिस्पॉन्स? तुरंत आप भी मारोगे, राइट? दैट इज योर रिस्पॉन्स, करेक्ट? वैसे ही जब बॉडी में कोई पैथोजन आता है तो बॉडी थोड़ी आराम से बैठी रहेगी, आ गया चल इन्फेक्शन कर ले। बॉडी इज गोइंग टू बी वेरी एक्टिव, यार पैथोजन आ गया है, कुछ तो रिस्पॉन्स करना है। तो वो रिस्पॉन्स में क्या करेगी बॉडी? हमारे इम्यून सिस्टम के जो सेल्स है वो एंटीबॉडीज वगैरह बनाने लग जाएंगे। दे विल बी वेरी अलर्ट एंड दे विल आइडेंटिफाई दैट पैथोजन एंड दे विल ट्राई टू किल इट, एंड दैट इज कॉल्ड एज इम्यून रिस्पॉन्स। तो हमारे जो इम्यून सिस्टम के सेल्स है वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगे एंड उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज इम्यून रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स गिवन बाय आवर इम्यून सिस्टम। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एंटीबॉडीज। सो रिस्पॉन्स में हमारे सेल्स ने क्या बनाया? रिस्पॉन्स में हमारे सेल ने एंटीबॉडी बनाया। सो एंटीबॉडीज आर द प्रोटेक्टिव केमिकल्स which are produced by immune cells in response to antigen। तो जैसे ही हमारे बॉडी में एंटीजन जाता है तो हमारे इम्यून सेल्स क्या बनाते हैं? एंटीबॉडीज बनाते हैं। ओके, वी आर गोइंग टू टॉक इन डिटेल कौन से सेल्स है इम्यून सिस्टम के, कैसे एक्शन करते हैं, एवरीथिंग विल बी taught to you in the subsequent lectures। ठीक है, 2 वीडियो ये चैप्टर के अपलोड किए थे, एक मलेरिया था, एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन था, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, वो अपलोड किया हुआ है। रिमेनिंग पार्ट आई विल ट्राई टू अपलोड। ओके, so that is antibodies. So antibodies are what? They are the protective chemicals which are produced in response to antigen, and antigens are any foreign substance that are capable of stimulating an immune response। क्लियर है? तो 3 डेफिनेशंस जो आपको एटलीस्ट आने चाहिए यहां तक, हेल्थ, एंटीजन, एंटीबॉडी। क्लियर है? एंटीजन बहुत इजी है कॉन्सेप्ट, जो भी पैथोजन अंदर जाता है उसको एंटीजन कहते हैं, और जो प्रोडक्टिव केमिकल्स हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स बनाते हैं उनको हम एंटीबॉडी कहते हैं। ओके, सो एंटीबॉडीज आर द प्रोटेक्टिव केमिकल्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पांस टू द एंटीजन। सो अब पढ़ते हैं, अब हमें पता है कि एंटीजन क्या है, इम्यून सिस्टम क्या है, इम्यूनिटी क्या है। अब पढ़ते हैं कि हमारे ह्यूमन इम्यून सिस्टम में होता क्या क्या है, ऐसा क्या है हमारे इम्यून सिस्टम में जो हमें थाउजेंड्स ऑफ पैथोजन से बचा के रखता है। सो हमारा इम्यून सिस्टम में होते हैं 2 चीजें, सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स। सो क्या होते हैं? सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स। तो सेल्यूलर में जो केमिकल मॉलिक्यूल्स है दैट इज एंटीबॉडीज, एंड मॉलिक्यूल्स में आते हैं आपके कुछ सेल्स जैसे कि आपके WBCs, एंड कुछ टिश्यूज आते हैं जैसे कि इंटेस्टाइन में द पेयर्स पैचेस, देन द लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ओके, दैट इज योर बोन मैरो। सो दीज आर द वेरियस things which are present in our body which provide us with immunity। ठीक है, तो ह्यूमन इम्यून सिस्टम में सेल्स है, ह्यूमन इम्यून सिस्टम में केमिकल मॉलिक्यूल्स है, टिश्यूज है एंड ऑर्गन्स है which helps us from getting disease। And as in this chapter we are going to study about immune system in detail, study of immune system is called as immunology। What is it called? Immunology। ठीक है, so study of immune system को हम क्या कहते हैं? immunology। So let us see the last part of this lecture, that is branches of immunology। तो 4 branches होते हैं। सबसे पहला वाला जो है उसको basic immunology कहते हैं, second one is clinical immunology, third is laboratory immunology and fourth one is serology। तो कौन से 4 ब्रांचेस है? बेसिक इम्यूनोलॉजी, क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी, लेबोरेटरी इम्यूनोलॉजी एंड सीरोलॉजी। So these are the 4 main branches, जिसमें से सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज बेसिक इम्यूनोलॉजी। बेसिक इम्यूनोलॉजी मींस स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। सो एज हम इम्यून सिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ेंगे ये चैप्टर में, मतलब वी आर गोइंग टू डील विद द बेसिक
immunology. ठीक है. Then coming to the next one, that is clinical immunology. So it is the application in healthcare, जैसे कि vaccination क्या होता है, organ transplant, organ grafting, blood banking, तो ये सब आता है आपका clinical immunology में. Okay, so we are going to talk about vaccination in this chapter also. ठीक है. तो जब भी हम क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी मतलब क्लिनिकल रिलेटेड कुछ पढ़ते हैं, जैसे कुछ इम्यून सिस्टम की डिसीजेस पढ़ते हैं, ब्लड रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में, ऑर्गन ग्राफ्टिंग, वैक्सीनेशन, तो ये सब आता है हमारे क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी. थर्ड वन इज लेबोरेटरी इम्यूनोलॉजी. सो इट डील्स विद द टेस्टिंग, लाइक यू पीपल हैव, शायद से यू पीपल हैव गॉन थ्रू द ब्लड टेस्ट एंड ऑल दो स्टफ. सो जितनी भी टेस्ट जो पैथोलॉजी लैब में होते हैं, that is under laboratory immunology. And the last one is serology. तो study of antigen antibody reaction is called as serology. तो जब हमारे बॉडी में एंटीजन आता है तो कैसे एंटीबॉडी बन के उसको डिस्ट्रॉय करती है, कैसे करती है, 3 स्टेप्स में करती है, वीडियो में बताया हुआ है, लाइक ऑप्सोनाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ये 3 कुछ स्टेप्स होते हैं जिससे हमारे एंटीजन और हमारी जो एंटीबॉडी होती है वो एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है. खैर उसके बारे में हम डिटेल में बाद में भी पढ़ेंगे. सो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दैट सीरोलॉजी इज स्टडी ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन. Okay, so that is 4 types of immunology which you should know. Okay, so that is all about your immune system and immunology. तो यहाँ पर आपका जो बेसिक पार्ट ऑफ द चैप्टर है वो खत्म हो जाता है. जैसे कि अगर हम बात करें तो वी स्टार्टेड विथ हेल्थ, देन वी टॉक्ड अबाउट कि हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है दैट इज हाइजीन. फिर थर्ड थिंग वी टॉक्ड अबाउट द रेसिस्टेंस, देन व्हाट इज इम्यून सिस्टम, what is immunity, what is antigen, what is antibody, right? And then we'll finally talked about the parts of your immune system and the branches of immune system. So that was all about for this video. In next video we are going to talk about, you can clearly see dikha hai, we are going to talk about the types of immunity and about one of the types in detail. ठीक है, हम innate 2 types के basically immunity होती है, innate and acquired. So next video में I'll introduce with the type of immunity and we are going to talk about the innate immunity. ठीक है, so this was just an introduction of the chapter, and in the next chapter the main part, that is the types of immunity, is going to get started. So if you have liked the video, do hit the bell icon, do subscribe to my channel and share it with your friend as much as you can. Soon I'm going to bring up with lots and lots of new things. I'm trying lots and lots of new things. You must have seen me uploading like a lot of shorts, so that if you don't know a few things, like abhi milk breeds dala hua hai, then I'm going to upload about sheep hai, goat hai, all those small extra stuff for need which are very important. I'm trying to upload that as a short so that आपका time भी save हो जाए, आप चीजें भी देख लो. Plus I'm trying कि मुझे जो लग रहे हैं यार ये MCQ tough है, शायद बच्चे से skip हो सकता है, so I'm trying to upload that also as a short. But soon I'm going to come up with a very important sessions of MCQs, live sessions of MCQs just after your boards exam. But first let us prepare for your boards exam, and if you have any doubts you write it in the comment box. I'll soon meet you with the next lecture. Bye till then, bye, take care, work hard for your dreams. Bye.